देखिए, लाइफ इज नॉट ऑल ब्लैक और व्हाइट, ग्रे के भी बड़े सारे शेड्स होते हैं। वैसे ही सच और झूठ के बीच में ना एक ना दिखने वाली लाइन होती है, जिसको अक्सर आप और मैं अपने फायदे के लिए यूज करते रहते हैं। तो ये हमें क्या बनाता है, गुड गर्ल या फिर गुड बैड गर्ल? वेल, ये हमें जल्द पता चलेगा। सोनी लिव पे इसी नाम की एक सीरीज आने वाली है, जिसके बारे में बात करने के लिए आज शो की जो प्रोटैगनिस्ट, और शुड आई से एंटैगनिस्ट, ये भी उन्हीं से हम जान लेंगे। हमारे साथ है समृद्धि दीवान। सो बहुत सारी बातें समृद्धि से हम सीरीज के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समृद्धि, अ वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Nidhi. Thank you for having me. Yes, the pleasure is ours because इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जब भी, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या होने वाला है शो में। सो टेल मी, व्हाट इज गुड बैड गर्ल अबाउट? So, Good Bad Girl is about a girl whose name is Maya Ahuja, who is a good bad girl. So, like most real people in life, वो भी थोड़ा ग्रे इंसान है। काफी सारी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में, पर काफी सारी प्रॉब्लमैटिक चीजें भी हैं, या एटलीस्ट वो ऐसी सिचुएशंस में जरूर काफी ज्यादा पड़ती है जिसमें जैसे वो बिहेव करती है, जो वो करती है, वो स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक माना जा सकता है। सो इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ माया आहूजा एंड बचपन से लेके कॉलेज में और फिर करंट डे जब वो लॉयर बन गई है। तो आप 3 ट्रैक्स देखेंगे शो में। अच्छा, टीजर में जो हमें समझ में आया ना कि वो उसकी शुरुआत जो है ये ग्रे लाइन पे चलने की उसके बचपन से ही हो जाती है, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी फाउंड वेरी रिलेटेबल, क्योंकि बचपन में हर बच्चा झूठ बोलता ही है ना। कभी मार्क्स नहीं ठीक आए, कभी दोस्त के घर जाना है, उसके लिए हम बोलते हैं। और पेरेंट्स भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं, जो मैंने देखा सीरीज में आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स की वजह से ही सब कुछ होता है। तो वो आपके जो बच्ची कैरेक्टर बनी, उसने बोला भी है ना कि फिर सच है क्या? तो हाउ मतलब बेचारी को कंफ्यूज मत करो ना, लाइक तो फिर आप सीरीज में कितना कंफ्यूज हुए? मतलब वो बच्ची बड़ी हो गई एंड नाउ यू आर प्लेइंग द रोल, वो अब उसको वो फाइन लाइन के बीच में झूलती रहती है कि मम्मी पापा भी ठीक ही गए, दे आर ओके विद इट। आई थिंक वो कंफ्यूजन माया के बचपन में हुई थी, एंड देन आई थिंक उसके कॉलेज ट्रैक में जो भी मैं प्ले करती हूँ उसमें भी आई मीन शी उसके साथ काफी कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से उसे समझ में आ रहा है कि हाउ कैन आई गेट द मोस्ट आउट ऑफ अ सिचुएशन फॉर माई सेल्फ। लेकिन अब जो करंट डे है जहाँ पे माया पहुंच चुकी है, वो लॉयर है एंड शी इज डूइंग वेरी वेल, उसमें आई थिंक उसका बिहेवियर सेट हो गया है। शी इज अ मोर कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ व्हाट यू सी दैट किड कि माया को अब पता है, मतलब उसको पता है कि कैसे करना है, और किसी सिचुएशन में पड़ गए तो उसको कैसे मनूवर करना है, वो सच निकल आया तो उसको कैसे करना है। सो शी इज क्राफ्टी इज द वर्ड। तो मतलब बचपन में जो बेचारी कंफ्यूज होकर सवाल पूछती थी फिर सच क्या है, वो बड़े होके ना वो खुद ही शी नोज। एंड वो एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी टीजर में, दैट यू नो बैकग्राउंड में योर कैरेक्टर इज ओनली स्पीकिंग ऑल्सो, के जैसे अभी उसकी जब बॉस बोलती है कि व्हाई कांट आई फायर यू, तो बिफोर गिविंग द आंसर वो एक वॉइस ओवर चल रहा है बैक तो वो उसकी इनर आवाज है, राइट? हाँ हाँ, हालांकि शो में देर इज अ वॉइस ओवर दैट गोज ऑन, जो कि काइंड ऑफ माया की इनर आवाज है, विच इज बीइंग डन बाय अ फीमेल वॉइस आर्टिस्ट। एंड आई मस्ट से कि वो मुझे काफी न्यू चीज लगी, क्योंकि काफी सारे शोज में हम देखते हैं कि वॉइस ओवर है बट इट इज नेवर अ वुमन्स वॉइस। बट इन आवर शो भी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जब मैंने वो पढ़ा था, तो बिकॉज ऑफ हैबिट मैंने भी अज्यूम किया कि ऑफकोर्स ये आदमी की आवाज होगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, थोड़ा अमिताभ बच्चन लाइक आवाज होती है यूजुअली कि भारी आदमी की आवाज वॉइस ओवर में आती है। लेकिन when and I have seen like 1-2 episodes of the show now, and I was surprised because it's a woman's voice. And when I asked Abhishek the director कि अरे ये तो you know female voice है, he said obviously शो लड़की के बारे में है तो obviously female आवाज है। And I was like yeah, so it's obvious, but I didn't think. Yeah. No, but you are right. As I said कि मेरा ध्यान भी उस पे ही गया, because एक तो it's very refreshing to hear a woman's voice. दूसरा वो मुझे यही लगा, I mean now you're telling me it's a female voice over artist, but मुझे ऐसा लगा like it's your character's inner voice and you're only giving it. No, that's true. In the trailer it is my voice. अच्छा, okay.
In the trailer, it is my voice, but in the show, we will a female narrative voice will be established. Which is Yeah. again refreshing, and of course होगी वो आपके कैरेक्टर की ही inner voice, तो that makes the whole narration very interesting also, कि एक तो जो हमें I सामने would say inner voice तो है, but it's more than an inner voice. It's like a little bit of a more insightful character. हाँ शायद उस टाइम पे जो माया ना भी सोच रही हो, वो इस वॉइस के कैरेक्टर को पता है अच्छा कि okay हाँ, तो स्लाइटली वाइजर कैरेक्टर. okay that's going to be interesting to watch, क्योंकि एक ना दिखने वाला कैरेक्टर भी पूरा सीरीज में साथ में चल रहा होगा जो सुनाई दे रहा है हमें. But let's talk about how this happened to you, when you were given आपने audition दिया, and what is the kind of process that you went through? So I honestly gave very many auditions for it. अच्छा So I think the first time I did it, अब तो एक साल टाइप हो गया होगा. I did many auditions for it over a month, and I think basically it's very, like I said, एक तो आपके फीमेल ड्रिवन शोज हैं ही कितने, आप दो हाथों में गिन सकते हो, एंड उनमें से भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट कितने एक्टर को दिया जाता है जो ऑलरेडी बहुत फेमस नहीं हो या बहुत नोन नहीं हो. So it is truly like it's an unbelievable thing that happened to me. जब audition भी मेरे पास आ रहा था, I was a bit like, ये मेरे पास क्यों आ रहा है audition? Like this is the part that a much more well-known actor they could have easily got for, no doubt about it. But I got really lucky. And I was told that that they loved my auditions, and they even that nothing else mattered. So I think I just got really lucky. Okay. And so you play a lawyer, but also your story is more about you in the courtroom than obviously outside also. But जब आप courtroom के scenes कर रही थी, so you had to kind of know the jargon. Yeah, I did have to know the jargon. For that, जब हम prep कर रहे थे, तो तब COVID type lockdown and all चल रहा था. Lockdown not so much, but court physically नहीं हो रहा था. So we attended some online court sessions जैसे तब हो रहे थे. And it was very voyeuristic कि हम बस बैठ के देख रहे हैं, और obviously उनको नहीं पता है. But it was interesting because I feel like we don't think of court sessions like that. जो वो रियलिटी में होते हैं, हमको सिर्फ तारीख पे तारीख ही याद आता है, और वो ड्रामा याद आता है, और मतलब हथौड़ा वो हो रहा है. So ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी. So I think we also had to find a balance कि we don't want to take it into what the film industry makes court out like, but we also don't want it to be the way it really is, and it is very slow. It can be very slow and very like it goes on and on. So there was like a balance that had to be struck in the writing also. But honestly, all that work हमारे writers के through उन्होंने already कर लिया था. So okay. Tell me, how was the shooting experience? Because you've done some scenes with Gul, Vaibhav के साथ भी काम कर रहे हो आप, तो कैसा रहा? Yeah, so I feel like I've done a couple of shows before this, and I feel like this one was very different shooting wise because a lot of it was on live locations. तो ऐसा नहीं था कि set लगा हुआ है और हम रोज उस पे उधर जा रहे हैं. तो ये live locations थी, इसके challenges अलग थे, इसमें जो हमें मिलता था, if things would go like well, and thankfully usually they would, then it would be like that much nicer, because a set at the end of the day is a set and a live location is just different. Yeah. So सारे office scenes and all were shot in an office. सारे outdoor scenes जो भी हैं वो actual locations पे shoot हुए हैं. I feel like cheating उस हिसाब से काफी कम हुआ है इस show में. And and with the actors, I feel like my favorite time, there's a lot that you see in the show sections wise. You see the office that she goes to, you see the courtroom, you see her house or whatever. But my favorite has to be the office because I had Vaibhav there, and Vaibhav's character is my enemy in the show. And हमारा थोड़ा relationship show में Tom and Jerry type का है. So we pick on each other, we like, it's very like snappy and fun. But the contrast is also in real life, it's like the opposite. We're really chill, and so it used to be very funny क्योंकि जैसे ही cut होता था, this energy would become like just chill. So that was a lot of fun. And with Gul ma'am, of course, she
you just have so much to learn from a person like that, right? I mean, somebody can be a lawyer and a pilot and a fitness person, and like I think he's just too many things for you to. You can just take so much from her. So, Correct. and she's also very generous. So there's a lot to take. Okay. And in terms of your character, जो आपका role आप play कर रही हैं, Maya. So how much could you relate to her? मतलब apart from the fact कि यार life में कभी ना कभी हम वो grey वाला area cross सभी करते हैं अपने फायदे के लिए. But how much could you relate to her in terms of Samriddhi versus Maya? When I started, I thought कि ये तो बिल्कुल भी मैं relate नहीं करती. क्योंकि एक तो मैं काफी खराब लायर हूँ और I very rarely get away with lying. So I feel like that, and also just generally Maya is like a really pacey, go-getter sort of person. I feel like I'm unfortunately not like that. I'm like more like, let's see what's happening, go with the flow type of personality. But now that I've done it and I've found that character somewhere inside me, I feel like she must be there. She must be there inside of me somewhere, for sure. अच्छा, ये other way round होता है ना, जनरली आपका जो बेसिक ट्रेट होता है वो कहीं ना कहीं जो रोल आप लोग एज एक्टर्स प्ले करते हो उसमें डालते हो, अभी उल्टा हो गया, जो आपने रोल प्ले किया हाँ, ये उल्टा हो गया. नहीं, क्योंकि करने जब शूटिंग चल रही थी, a few times कुछ break days आते थे, so I would go, hang out with my friends and all, and suddenly sometimes I would say something, they would suddenly be like, that doesn't sound like you. Like that's तुम तो ऐसे कभी बात नहीं करती. Why did you say this? And like I pretty sure I offended some people also, and they were just like, what's wrong with you? Like what's really? Okay. But tell me your journey so far. How did it start and how fulfilling do you think has it been? मतलब acting का कीड़ा कब से आया and then how did it happen, all of this? तो मैंने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया. मैं मिरांडा हाउस में थी और वहां पे मैं लिटरेचर पढ़ रही थी, और उसके साथ साथ लाइक आई थिंक मोस्ट लिटरेचर स्टूडेंट्स हम ड्रामसॉक में शामिल हो जाते हैं ऐसे साथ. तो माय कॉलेज लाइफ फॉर 3 years वाज जस्ट ऑन स्टेज, एंड फिर आपके पास इंग्लिश ऑनर्स है तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि करना क्या है फ्यूचर में. एकेडमिक्स में मुझे जाना नहीं था. सो एट दैट टाइम आई फाउंड a theater school which was a 1-year program. तब लग रहा था वो NSD का नहीं पता, क्योंकि NSD is 3 years. I don't even know if I want to be an actor, if I have the kind of ability to do that. So I found this other thing that had opened up called the Drama School Mumbai, जो अब काफी popular program है, मुंबई में ही है. So I convinced my parents कि मुझे gap year आप लेने दो और मुझे मुंबई जाने दो और मैं ये करूंगी, और फिर तब तक मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है. So they were like, okay, whatever, do. If you must, then whatever. And so I did that. And then I did like post it, I did like 2 years of just purely stage work, and which was very fulfilling. But of course, being on stage is unfortunately not enough in our country. It doesn't pay. So you have to have other things that you can kind of latch on to. So I started to audition, and then I got my first like acting gig, which was Stories by Rabindranath Tagore, जो अनुराग बासु का show था, जो Epic Channel पे था. It was like short stories, one hour episode. So I was in one of them, and then slowly I started getting like more work. But honestly, it's been very slow. While it's been very fulfilling, it's been very slow. There's been many moments where I've thought ki I don't know if it's worth it. So yeah, but whenever I've been on set, I feel like it's just still till date, and I've done a few shows now and I've done a certain amount of work. I'm like, I can't believe it. I can't believe that I get to do this. So, right. But has it now sunk in finally that acting is what I am doing and acting is what I want to keep doing? I think what I want to keep doing is definitely has always been the case. I don't think it's still sunk in that the acting is what I'm doing, that it is sustainable for me. I don't think that's sunk in yet. And I hope that in time that can happen.
Yes, let's hope for that. But what are the kind of dream roles? जैसे every actor has, you know, यार ये project कर ले life में एक बार ये वाला type का role. Of course, your life in terms of your acting career has just started and may you go a long way. But फिर भी top of the mind कुछ आ रहा है कि यार ऐसा वाला एक role मिल जाए, ऐसी एक film मिल जाए या ऐसा एक serial मिल जाए. You know, I feel like I think the thing that I really, really want to do is action. Okay. I want to punch some people, and I Uh-huh. want some crazy action and jumping and flying to happen. That's like that's something I really want to do. But having said that, I think I've been very lucky so far. जो भी मैंने काम किया है, and it's not that much also. It's been very different from each other. So the show that I did before this was The Office. उसमें मैं एक receptionist play कर रही हूँ जो फरीदाबाद में काम करती है एक छोटे से paper company में और and that's just so different from Maya. So I feel like the agenda is always कि जो पीछे किया है उससे अलग चीज मिल जाए. Another short film that I did, I played a lesbian woman who is a boxer and who lives in Manali and from a very different sort of social strata. So I feel like that's also very, very different from everything I've done. Correct. So that's the dream, to like keep doing, to keep exploring different sort of like people. Correct. And I think that's also how people would want to see you. क्योंकि stereotype में अगर एक actor बच जाता है, then we also have expect अच्छा वापस से वही काम कर रहे हो. So may you keep getting that different kind of work, Samriddhi. But if you have to sum up in one sentence, in one line about this upcoming show, तो क्या बोलोगे? What is the one thing you will use to lure the audience? Because अभी इतनी variety है of watching so much. What is the one thing according to you that people should look out for in the series? I would say to people कि yes, variety बहुत ज़्यादा है अभी, lots to pick from, पर ऐसा कुछ नहीं है. So it's definitely something new and I can guarantee that. So you will watch it and you will feel like ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा on Indian OTT for sure. Okay, great. But is there something else lined up in the pipeline where people are going to watch you after this? Yeah, but like it's so initial that बिल्कुल भी बताना नहीं बनता है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम patiently wait करेंगे फिर. So I will wait for another opportunity of an interview. So on that note, Samriddhi, wishing you all the luck for the success of this series, and of course जितने भी काम आपने बोले ना वो action, punching सब कुछ आपको मिले. Yeah. And good luck for your future, and may the feeling also sink in finally कि मैं कर रही हूँ अभी acting. Thank you so much, Nidhi. We are waiting for that day. Yeah. So thank you for the interview.